Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Activists from Pakistan's illegally occupied territories pay tribute to Arif Shahid on his 9th martyrdom anniversary. People of illegally occupied Gilgit-Baltistan Sakarkui area suffering due to lack of basic amenities. Jashn-e-Eid musical event organized in Srinagar to provide platform to budding artists. Development activities in full swing in J&K's border villages of Rajouri. And later in a section of Incredible India, we'll take you to soak in the mesmerizing beauty of Shimla in Himachal Pradesh. Be it putting ban on print or electronic media houses, arresting the journalist or assassinating the human rights defenders, Pakistan has a long history of silencing the voices of dissent. The brutal killing of Sardar Arif Shahid, a prominent leader from illegally occupied POK, on 13th May 2013 is the biggest example of Pakistan's enmity with freedom of speech and expression. Recently, on the occasion of his 9th martyrdom anniversary, intellectual and activists from Pakistan's illegally occupied territories pay tribute to his fearlessness. Have a look. हम आपके सामने उस पाकिस्तान की तारीख रखना चाहते हैं जो आपके साथ जबरन अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है और ये चाहता है कि मुसलमान होने के नाते जो है ये कश्मीर मुझे मिलना चाहिए। ये बहुत लंबी बात है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुल्क आपको ये कह रहा है कि आप अपने कौमी मुस्तकबिल का फैसला जो है ये हमारे साथ जो है वो वाबस्ता करें, हमारे साथ मिलें, क्योंकि आप मुसलमान हैं, वहां अक्सरियत में रहते, हम भी मुसलमान हैं। हम ये समझते हैं कि इंसान जहां कहीं भी पैदा हुआ है उसके पैदाश के तरीके एक जैसे थे, उसका किसी का जो है वो किसी का पैदाश पर अख्तियार नहीं था। लिहाजा ये है कि मुसलमान होने के जुर्म में हम पाकिस्तान की गुलामी किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। Refusing to accept Pakistan's slavery and strongly condemning its atrocious acts, Arif Shahid's voice was so powerful and fearless that Islamabad saw him too big a threat for it to handle. As a result, on the evening of 13th May 2013, an armed man pumped 4 bullets into 62-year-old Arif outside his residence in Rawalpindi. Until date, the killer has not been identified. His supporters allege that he was killed by the agents of Pakistan's military as he was against the merger of illegally occupied GB and POK with Pakistan. Recently, at a webinar that was conducted on the occasion of Arif Shahid's 9th martyrdom anniversary, Kashmiri activists said until he gets justice, they will not step back. हम इंसाफ के उसूल के लिए पुरअमन आवाज उठाते रहेंगे। 9 साल नहीं, 9000 साल भी लग जाएंगे तो भी मैं ये समझता हूं कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये आज की एक रिकॉर्डेड ये वेबिनार होगा कि वो इस सफर की रोशनी में अपने शहीदों को खराज अकीदत भी पेश करते रहें और इंसाफ के उसूल के लिए, आज़ादी के उसूल के लिए, वतन की वहदत की बहाली के लिए जो लोग भी जहां भी जो भी किरदार अदा कर रहे हैं वो उनके छोड़े हुए नक्शे पा पर अपना सफर जारी रखेंगे। It is not just Arif Shahid, but Islamabad has mastered the art of eliminating activists and leaders voicing their independent opinion even in their own provinces. Its army is accused of arbitrary detentions, enforced disappearances and extrajudicial killings. History is testimony to the fact that anybody daring to speak against the barbarity of Pakistan meets the same fate. पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है और पॉलिसी साज हैं वो मुकदमात दर्ज करने का तकल्लुफ नहीं करते, बल्कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है। हर सैन वाइस को, हर उस शख्स को जो आज़ादी की बात करता है, इंसानों के हक की बात करता है, जो अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, उसको फतवों से पहले नवाजते हैं। उसके खिलाफ बड़े बड़े जो है वो ऐलानात किए जाते हैं गद्दारियों के, मजहब दुश्मनी के,
और फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। Arif Shahid was a vocal critic of state atrocities and a political activist who wanted POK and Gilgit-Baltistan to be freed from the clutches of Pakistan. His killing was a setback for the people of illegally occupied territories who are still fighting for their fundamental rights. Be it providing basic amenities to its people or fulfilling their rightful demands, the government of illegally occupied Gilgit-Baltistan, which works in cahoots with Islamabad, has always lagged behind. It is only concerned with filling its own coffers rather than doing something for the betterment of its people. As a result, time and again, people have to come on the streets to demand their rights. Recently, the locals in Gilgit's Sakarkwe area held a protest to highlight their plights. People residing in the villages of illegally occupied Gilgit-Baltistan have been for long suffering due to lack of basic amenities. Blessed with natural beauty and equipped with abundance of resources, these villages can become self-reliant if a little heed is paid. But thanks to the apathetic government of the region, that has even failed to do so. As a result, people across villages have to come on roads time and again to demonstrate against the authorities. Recently, the local residents of Gilgit-Sakarkui, especially those belonging to Halka 1, held a protest to highlight their issues from which they have been suffering for the last 7 decades. ये इलाका बल्दियाती इंतज़ाम के तहत चल रहा है। जो बल्दियाती स्ट्रक्चर म्यूनिसिपल कमेटी का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत ये इलाका चल रहा है, लेकिन पिछले 70 सालों से बल्दियाती इलाके में होने के बावजूद भी यहाँ पे बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसके अलावा पानी की सहूलियात 70 की दहाई में एक टैंकी यहाँ पे बनाई गई, 150 घराने उस ज़माने में यहाँ पे आबाद थे। आज ये इलाका 1500 से ज़ायद घरानों पे मुश्तमिल है, मगर वहीं 150 घरानों के लिए जो टैंकी बनाई गई थी वही टैंकी आज भी मौजूद है। बाकी 1350 घराने आज भी पानी की सहूलियात से यहाँ पे महरूम हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त सरकार कोई नज़रअंदाज है और इस वक्त मसाइल में सबसे ज़्यादा सरकार को गिरा हुआ है। मैं दूसरे हलकों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस हलके की और सरकार की बात करूंगा। इस वक्त हमारे आप हज़रात देख रहे हैं रोड की हालत क्या है। जैसे हमारे बड़ों ने कहा कि डिस्पेंसरी का मामला है, उसके बाद पानी यहाँ नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। Besides being deprived of basic facilities like proper water supply and primary health care, education sector is also in shambles in Sakarkui area. Locals say that even after several requests, the politician elected from their area hasn't even tried to resolve their issues for once. हमारे 4 मुतालिबात हैं। अच्छा, पानी है, फाइबर है, गैस है और रोड है, एजुकेशन वगैरह ये चीज़ें हैं। 70 की दहाई से ये सकारकुई मुतासिर है, यानी कि रोड कोई 30 सालों से ये रोड मेटल नहीं हुआ है और कोई 1300 घरानों पे मुश्तमिल एक प्राइमरी स्कूल है। गर्ल्स कोई मिडल के एक गर्ल्स स्कूल है और बॉयज़ एक प्राइमरी स्कूल है। बाकी कोई ऐसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अपोजिशन लीडर साहब हैं, तो कभी उसने ज़हमत भी नहीं की है। 2-3 बार हम उसके पास गए भी हैं कि सकारकुई में कोई आप एक बार विजिट तो कर लें। चलो एक बार वोट नहीं हुआ, अगली बार तो कोई देगा वोट, लेकिन वो लोग मज़हबी उससे आए हैं तो नज़रअंदाज कर रहे हैं इलाके को कि अमजद साहब को चाहिए था कि सकारकुई के अवाम को आके इनसे इनका हाल पूछ ले, लेकिन उन लोगों ने कोई वो नहीं किया। The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have time and again raised their voice against the stepmotherly treatment meted out on them. They blame the incompetent and impassive rulers of the region who are just concerned about serving their masters in Islamabad rather than doing anything for the betterment of the region.
And next we move on to Jammu and Kashmir that recently hosted Jashn-e-Eid festival on the banks of the famous Dal Lake. Aimed at providing a platform to young talents, the event saw a perfect amalgamation of traditional and modern. Have a look. Zabarwan Park, located on the banks of Dal Lake in Srinagar, recently became an epicenter of joy and enthusiasm as it hosted the Jashn-e-Eid musical event. It was organized by a local entertainment group with support from Chinar Corps of the Indian Army. The main purpose of the event was to provide an opportunity to budding artists to showcase their mettle, besides creating awareness among the youth to stay away from drugs. पीछे जो बैठे हैं जिनके पास टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाते। आगे क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके पास या तो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। जो ड्रग्स ले रहे हैं मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, ये आप छोड़िए, आप जो आपके पास हिडन टैलेंट है उसको आगे लाइए, उसको लोगों के सामने पहुंचाइए, क्योंकि ड्रग्स में कुछ नहीं रखा है। ड्रग्स से क्या होगा कि आपके घर वाले भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे और सोसाइटी भी खराब होती है उससे। तो इस टैलेंट से, इस इवेंट से ऐसा होगा कि जो बर्डिंग यूथ है वो आगे आएंगे और अपना टैलेंट पूरे कश्मीर को दिखाएंगे, पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे। ये इवेंट यूथ के लिए है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने इस साल ये हमारा लगभग 4th-5th इवेंट है, तो हमारी कोशिश यही है कि जो टैलेंटेड यूथ है उनको हम प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे हमने देखा, हमने 2019 में भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स किए हैं और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से थोड़ा थम गए थे इवेंट्स, तो इस साल फिर से वो सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा यूथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके जुड़ रहे हैं। From dancing on Kashmiri Rauf to singing Bollywood songs and raps, artists mesmerize the audience with a wonderful mix of tradition and modernity. From young to old, artists from different age groups presented their talent at the event. Locals wish to have more such events in future, as they not only boost the morale of the artists but also provide exposure to them. आर्मी की अगर हम बात करें, जो कि हमेशा यूथ को सपोर्ट करती है, और फिर जो कि हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है ताबिश बुखारी, तो उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और काफी यहाँ पर सिंगिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, तो हर इवेंट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे और बच्चों को अगर इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो शायद उनके लिए भी फायदा होगा, हम जैसे नौजवानों के लिए भी फायदा होगा, और जो डेली वेजर्स बाहर घूम रहे हैं, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। हर टैलेंट को यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे इवेंट्स हम चाहते हैं कि हर रोज हमें यहाँ पर देखने को मिले। महीने में 3 से 4 ऑलरेडी आर्मी जो है वो हमें स्पॉन्सर करती है, इवेंट्स कराना हमारा काम होता है। तो हम यूथ को यही मैसेज देंगे कि आप लोग भी हम सामने आए और इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, खुद के बिजनेस स्टार्ट करें और खुद के इवेंट्स क्रिएट करें। Jammu and Kashmir is a reservoir of talent, and to give this talent wings to achieve their dreams, providing a platform is must. In such a scenario, organizing events like Jashn-e-Eid can go a long way in helping the budding artists realize their potential and achieve great heights. Infrastructural development is going on in full swing in Rajouri district of Jammu and Kashmir. From construction of water harvesting tanks to bunkers to pakka houses under PMAY, several projects are being undertaken across the district, especially in its Naushera subdivision. Locals are giving credit to the 3-tier Panchayati Raj system, which is bringing progress and is enabling them to derive benefits of all the government schemes. Development of border villages is must for any nation's progress.
Considering the same, several development works are going on in full swing across the border villages in Naushera subdivision of Rajouri. While connectivity is getting improved with the laying of metal roads, streets too are being upgraded to felicitate locals and avoid any mishappening. Rainwater harvesting tanks are also being established to solve the water woes of the local people. In these tanks, water can be collected during rain and can be stored for later use. Construction of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana or PMAY is also bringing smiles on the faces of many people in border villages of Rajouri. Expressing their gratitude to the Prime Minister, locals say, with the introduction of three-tier Panchayati Raj system in Jammu and Kashmir, development is taking place at grassroots. हमारी पंचायत में काम जो है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उन्होंने पंचायतों को इतना सशक्त बनाया, 3 टायर सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी सब 3 टायर सिस्टम बन चुका है और आज पंचायतों में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। चाहे आप कोई भी स्कीम है वो गरीब लोगों तक पहुंचती है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहले पंचायतों के पास कुछ भी नहीं था, सिवा झगड़े सुलझाने के अलावा वो और कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज पंचायतों के पास इतने फंड अवेलेबल हैं कि वो जो भी काम है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। इस पंचायत में बहुत से काम चल रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर रोड है, गलियों का चल रहा है, डी चैनल बन रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें भी पैसा मिला है, उसके तहत हम मकान बना रहे हैं, जहाँ हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ रहने वाले हैं। जो मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है, इसके तहत हमें जो पैसा मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का। The construction of bunkers by the Rural Development Department in the Rajouri villages along LOC for the safety and security of people had also proven to be a big relief. Moreover, the strengthening of primary health care or PHC and implementation of government schemes like Ayushman Bharat in these areas is further contributing towards the welfare of border dwellers. They no longer have to cover large distances or worry about the money in order to receive any medical treatment. ये जो कम्युनिटी बंकर है ये पिछले साल ही बना है गवर्नमेंट की बॉर्डर एरिया स्कीम के अंतर्गत। जैसे सरपंच सर ने हमें बताया, पहले यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग वगैरह जो भी होता था, उसकी वजह से जो भी ट्रॉमा, जो भी हमारे पास कैजुअलिटीज आती थी यहाँ पे, तो कोई सेफ जगह नहीं थी उनको ट्रीट करने के लिए ट्रियाज में। बट अब इस कम्युनिटी बंकर के बनने के बाद स्टाफ वाले भी कोई भी अगर कैजुअलिटीज इन केस ऑफ शेलिंग, अब तो चलो थोड़ी कम हो रखी है, सीज फायर हो रखा है, बट इन केस ऐसा कुछ भी अगर होता है तो एक सेफ जगह है स्टाफ के लिए और कैजुअलिटीज के लिए, उनको फर्स्ट एड ट्रियाज वगैरह देने के लिए। इस वक्त तो हमारे पास जितना अलॉटेड स्टाफ है वो पूरा है, लैब टेक्नीशियन से लेके, एमओ से लेके, डेंटल सर्जन से लेके, सफाई वाले से लेके, हमारे जो FMPW जो नर्सेज हैं वो भी हमारे पास इस वक्त स्टाफ है। जिस डिपार्टमेंट की जो स्कीम होती है उस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के हो गए, एग्रीकल्चर के कुछ लोग आते हैं हमारे पंचायत घर में, जहाँ कहीं गांव में जाते हैं, हम लोगों को वहाँ बुलाते हैं, हर वार्ड से हमारे जो वार्ड मेंबर हैं हम उनको बोलते हैं और वो उन लोगों को बुलाते हैं। जब वो लोग आते हैं और उसमें जो स्कीमों की जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उन लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद जो उनके पास फैसिलिटी आती है प्रोवाइड, वो भी प्रोवाइड भी करते हैं। इसके द्वारा आप कहीं आयुष्मान भारत की बात करें, वो कार्ड की, वो भी उसमें भी वो कार्ड घर घर जाके वो बना रहे हैं। इस तरह से जितनी स्कीमें सरकार ने लॉन्च की हुई हैं उसमें पूरा वो बढ़ चढ़ के सरकार जो है हमारी हेल्प कर रही है। Though many projects have already been undertaken in Rajouri district, many more are still in the road. The projects are prioritized in every village
as per the suggestions of the Gram Sabha. पिछले साल जो काम हुए बड़े अच्छे काम हुए लगभग 300 करोड़ के, लेकिन इस बार जो अभी नए काम जो है अभी हम टेंडर करने वाले हैं 10-12 दिनों में, उसमें 88 करोड़ के कैपेक्स बजट है, 5 करोड़ का जो है सीडीएन पंचायत बजट है और 260 करोड़ का नरेगा का जो है ये सारे बजट जो है डीसी साहब अप्रूव कर चुके हैं। डीसी साहब की गाइडेंस में ये सारे काम चल रहे हैं और इसके अलावा जो 10,668 जो है वो आवास प्लस में मकान जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, जिसका पैसा जैसे ही बड़ी जल्दी रिलीज होने वाला है और 30,000 के ऊपर जो है मकान पहले बन रहे हैं। तो अगर ये सारा देखा जाए तो कम से कम 10 लाख लोगों को घर जो है वो मिल चुका है, जब मिलने जा रहा है। इसमें हम जितने भी काम जो है वो ले रहे हैं हाथ में, वो सारे जो है ग्राम सभा उसको चुनती है, उसकी एक प्रायोरिटी देती है। तो उस ग्राम सभा ने जो काम रखे हैं वही हम काम जो है आगे कर रहे हैं। The improvement of infrastructure in the border areas of the territory will not only link people living in these areas to the mainstream, but also improve their living conditions and generate more employment opportunities. And next we move on to our section of Incredible India, where today we will take you to the Queen of Hills, Shimla, where tourists are coming in large numbers to obtain respite from the hot weather conditions. Ranging from adventure spots to a toy train journey on a picturesque heritage route, the majestic city is also not behind in leaving visitors spoilt for choice. Situated on the foothills of Himalayas, Shimla, the capital of Himachal Pradesh, is one of the most visited hill stations of the country. The city has a rich history and is home to a number of buildings that are styled in the Tudor-Bethon and Neo-Gothic architectures dating from the colonial era. The verdant scenery, salubrious weather and old-world charm of the city has always enticed nature lovers and travel enthusiasts from across the world. At present, with the heat wave besetting parts of North India, tourists are flocking the hill station in large numbers. काफ़ी अच्छा वेदर है। आज हम जैसे निकले हैं, अभी रूम से बाहर हैं, चेकआउट किया है, तो देख रहे हैं काफ़ी है रौनक है बाजार में और वेदर बहुत अच्छा है। Besides getting to soak in the serene nature, tourists are also indulging themselves in the adventure activities in Shimla to experience the adrenaline rush. The hill station and the nearby places like Kufri provide one with infrastructure as well as facilities to enjoy adventure sports. From valley crossing to skywalk to suspension bridge, there are a bucket of options to explore. यहाँ पे वैसे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं। यहाँ पे कोविड के बाद से 2 साल लॉकडाउन में थे, तो थोड़ा गर्मी इंदौर में काफ़ी गर्मी हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक लेने आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स किया है हमने, स्काई वॉक था, एक्सपेक्टर था और आगे राइड्स भी थी काफ़ी सारी, उसमें जिप लाइन भी था। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मुंबई में तो बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग यहाँ ठंडी में आए हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। हम लोग ने बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ किया, जिप लाइनिंग किया, 3-4 स्विंग के राइड्स किए, स्काई वॉकिंग किया। पहले बहुत डर लग रहा था ये देख के, बट फिर मज़ा आया करके। और अभी गो कार्टिंग और 2-3 एक्टिविटीज़ बाकी है वो करने वाले। Enjoying the toy train ride on the famous picturesque heritage route is yet another exciting thing to do in Shimla. Chugging along the line amidst lofty pines and lush green misty mountains,
The 115-year-old heritage steam engine that runs from Kalka in Haryana to Shimla offers one of the most scenic journeys in India. Laid out on a narrow gauge track that passes through 103 tunnels, 864 bridges, 919 stunning curves and 18 railway stations, the route was considered as the crown jewel of the Indian National Railways during British times. In 2009, it was declared as a World Heritage Site by UNESCO and also features in the Guinness Book of World Records for offering the steepest rise in altitude in the space of 96 kilometers. Amid the tourist season, authorities are making several arrangements to enable more visitors enjoy the train journey. हमारे पास ऑलरेडी कालका शिमला के बीच में पैसेंजर्स के लिए 6 गाड़ियां चल रही हैं, तो ये 7वीं गाड़ी जो है एज ए हॉलीडे स्पेशल इंट्रोड्यूस करी गई है मंडल कार्यालय द्वारा, हेडक्वार्टर के द्वारा। हमारा जो कालका शिमला का सीज़न है वो मोस्ट प्रॉब्ली 15 अप्रैल से ही शुरू होता है और जनरली हम 15 अप्रैल से ही हॉलीडे स्पेशल चलाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है इस टाइम, तो यहाँ पर आके मतलब वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और टॉय ट्रेन ने उसका एक्सपीरियंस और डबल कर दिया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। Shimla tourism has boomed over recent years and is growing consistently. Every year, thousands of visitors throng the place to have a peaceful environment in the India's most popular hill resort, far away from the maddening city crowd. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team. Zalan kotvan vesiye yarasvan dalailati yarasvan yar